ओके। तो चलो आम कि पॉलिटीर क्वेश्चंस डिस्कसन करवा। तो बुकटा जमती कि मु थंबनेल ऑलरेडी देती तो ये बुकटा ना पिनाकल एसएससी जनरल स्टडीज जिते सब ओडिशा रे एग्जाम होची कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो टीसीएस जो जो एग्जाम कंडक्ट करूची तो टीसीएस जिते भी एग्जाम कंडक्ट करूची सब ईयर शिफ्ट रो क्वेश्चन ए बुक रे एलाबोरेटली डिस्क्राइब होईची। तो तार आम पॉलिटीर कन्स्टिट्यूशन चैप्टर आज डिस्कसन करवा किसी एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ए टोटल ऑफ 11 सेशंस विथ सिटिंग स्प्रेड ओवर फॉर हाउ मेनी डेज। तो क्वेश्चन से करुच्ची कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल आमर 11टा सेसन नहीं तो से 11टा सेसन केतेटा सिटिंग भितर स्प्रेड होता। तो ऑप्शन अच्छे 180 165 115 एंड 132। तो आंसर है 165टा स्प्रेडिंग होता। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फास्ट तार सेसन स्टार्ट करता फास्ट सेसनटा होता आमर 9 डिसेम्बर 1946 है। तो फास्ट सेसन आमर 1946 स्टार्ट होता। आमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केबे हेतिला 26 जनवरी 1950 रे कमेंस्ड हेतिला अडॉप्ट हेतिला 26 नवंबर 1949। सेकंड क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन एस्टैब्लिश करिछि। पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, डुअल जुडिशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम एंड फ्लूरल जुडिशियल सिस्टम। तो इंडिया रो जो जुडिशियरी सिस्टम हमर अछि ताको हम कहंती इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। Third rela, who among the following while preaching the amending feature of Indian Constitution said that this variety in amending process is wise but it is rarely found। तो ये statement टा किए देइथिले बोली से क्वेश्चन करछे। ऑप्शन अछि ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवोर जेनिंग्स, केसी वेयर एंड एचएम सर्वाई। तो दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इज रेयरली फाउंड। ये स्टेटमेंट टा देइथिले केसी वेयर। Which of the following is not a feature of Indian Constitution? Indian Constitution रो ये चारिटा ऑप्शन भितर कोटा फीचर नुह बोली से क्वेश्चन करिछि। ओके। Universal adult franchise, independent judiciary, and dual citizenship, blend of rigidity and flexibility। Rigidity और flexibility रो blend in question अच्छी। Independent judiciary भी universal adult franchise रो हमें जानी चाहिए voting system हमारा जो मैंने 18 और above 18 से मैंने कौन करी परिवे directly vote देगी तंकरो representatives को elect करी परिवे। तो option है आंसर हमारा dual citizenship। तो इंडिया single citizenship ऊपर believe करे। Which of the following statements are incorrect? Features of Indian Constitution. Indian Constitution रो कोटा incorrect feature बोली से क्वेश्चन करछे। The Constitution empowers the Prime Minister to proclaim 3 types of emergency। देखो जे Prime Minister हमर emergency proclamation करंती Prime Minister करंती ना President करंती है। हमर 3 type रे emergency अछि national emergency, constitutional emergency और वाला financial emergency। national emergency मेंशन अछि article 352 हमर state emergency है article 356 365 और वाला हमर financial emergency article 360। तो ये तो भूले गला रिजर्वेशन पॉलिसी इज देयर टू अपलिफ्ट द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टा करेक्ट अछि। हमर रिजर्वेशन पॉलिसी रो मोटो ही एला है कि जो माने सोसाइटी रे डिसएडवांटेजेस क्लास रे अछंती डिप्रेस क्लास रे अछंती तांकर अपलिफ्टमेंट करबा। थर्ड ऑप्शन अछि द सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अच्छे से कुछ सुप्रीम कोर्ट रो किछि जुडिशियल पावर जुडिशियल रिव्यू रो पावर नाही। एटा इनकरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट पाखे जुडिशियल रिव्यू रो पावर थाए। जुडिशियल रिव्यू कोन जेतेबेले कोनोसी लेजिस्लेचर किछि लॉ पास करंती तो तार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करे सुप्रीम कोर्ट। तो जदि सेटा हमर कोन फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल को किछि हार्मफुल होइतिबो ताले ताको सुप्रीम कोर्ट कोन करे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे कि ताको सीज कर दे ताको जुडिशियल रिव्यू। The Constitution provide for universal adult suffrage। Universal adult suffrage Constitution provide करे हाँ एटा हला करेक्ट। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ए दुटा हला इनकरेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश एंड इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। से कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर केबे आसिला आ हमर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट केबे हैला। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हैला 26 जनवरी 1950।
Secularism is a feature of Indian constitution, which means the secularism ro manne kon. The state does not promote any religion. The state promotes the religion of the minority community. The state promotes the religion of the majority community. The state can promote any religion. The secularism ro manne hela state ro konosi official religion nahi na mane particularly konosi religion को state रो religion बोले हमें मानि परिबने. ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ସେକ୍ୟୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏନି, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଲୋ କରେନି, ସବୁ ରିଲିଜନକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ଏନି ରିଲିଜନ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇନ୍ which year did the Indian constitution declare Hindi in Devanagari script to be the official language of the union? ତ ଯେଉଁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ। आर्टिकल 343 मेंशन करे हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ना। जो वर्ल्ड हमर वर्ल्ड हिंदी डे केबे और नेशनल हिंदी डे केबे सेटा कमेंट सेक्शन में जणेबे। तो एटा केबे लागू हितला हमर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आस्थिला हमर 1949 रे। The preamble of the Indian Constitution described India as preamble हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बोली एक्सप्लेन करूची an atheist state, a unitary state, a secular state, a federal state। तो इंडिया हला हमर ऑलरेडी पूर्व क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे सेक्युलरिज्म रो डेफिनेशन रे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला ए सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा in which of the following years was the national anthem adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly? ଆମର जो कॉन्स्टिट्यूशनल ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ जो आसिला ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଆମର କ'ଣ ଜନଗଣ ମନ, ତ ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେବେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ତାର ଭର୍ଜନଟା ଆସିଥିଲା 1947, 1950, 1954 and 1942। आंसर ହେଲା 1950। When was the objective resolution moved by Pandit Jawaharlal Nehru? Objective resolution कौन? तो फर्स्ट में objective resolution कौन? Objective resolution कौन? The fundamental जो हमारा fundamental idea और philosophy of Indian Constitution objective resolution में थिला जवाहरलाल नेहरू ताको पास करथिले। क्वेश्चन होची केबे पास करथिले? 13 डिसेंबर 1946, 17 नवंबर 1946, 15 अगस्त 1946, 16 नवंबर 1948। तो आंसर है 13 डिसेंबर 1946। Which of the following is not a basic feature of Indian Constitution? Parliamentary system, blend of rigidity and flexibility, lengthiest written constitution, drawn from one source। तो कोटा basic feature नुह हमार Indian Constitution से क्वेश्चन करछि। तो कोटा नुह देखो parliamentary system Indian Constitution अछि, यूके रो बोरोड करा हेछि, blend of rigidity flexibility, lengthiest written constitution भी इंडिया रो नहले drawn from one source। गोटे सोर्स रो इंडिया रो constitution आसेनी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रो जो सोर्स को इंडिया बोरो करिछि और ताको इंडिया रो पीपल मानकर एस्पिरेशन अकॉर्डिंग ताको कोन करा हेछि constitution में मेंशन करा हेछि। तो आंसर अब drawn from one source। नेक्स्ट, who called the preamble of Indian Constitution the political horoscope of our Constitution? Indian Constitution को कौन किए कहिथिले कि ये हला हमर पॉलिटिकल होरोस्कोप किए कहिथिले? ऑप्शन अछि डॉक्टर के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर, एम हिदायतुल्लाह, सर अर्नेस्ट बेकर। तो आंसर है डॉक्टर के एम मुंशी कहिथिले जे इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रा होछि हमर पॉलिटिकल होरोस्कोप। When was the preamble to the Indian Constitution amended? India रो constitution रो preamble केबे amend हेतिला? 1976 मन रखिबे 42nd amendment act आसिला 1976 रे हमर 42nd amendment act आसिला ताको मिनी constitution बोली कहंती। constitution जानिया पे को बुक बोलो हमर देन पॉलिटिकल साइंस पे एम लक्ष्मीकांत पढ़ंतु। एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, नेक्स्ट है when is the Indian Constitution Day observed in India? इंडिया रो केबे Constitution Day हमरो सेलिब्रेट करा ऑब्जर्व करा जाय। आंसर है हमको 26 नवंबर। Who among the following followed is called the father of Indian Constitution? Indian Constitution का फादर का कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग इंडिया नेशनल फ्लैग को किए डिजाइन करथिले बीएन राव के एम मुंशी पिंगाली भेंकाया प्रेम बिहारी नारायण रायचदा द आंसर है हमरो पिंगाली भेंकाया इंडिया फ्लैग को डिजाइन करथिले Who among the following personalities was appointed as the legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Indian Constitution? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट करथिले तार एडवाइजर किए थिले मन रखते आंसर है बीएन राव The original constitution of India was handwritten in English by इंडिया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश रे किए लिखिथिले प्रेम बिहारी नारायण रायचदा Who among the following personality was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ ड्राफ्ट्समैन किए थे एस.एन. मुखर्जी. Who among the following wrote in calligraphic style in Hindi version of the original Indian Constitution? जो इंग्लिश रे लिखिथिले प्रेम बिहारी नारायण रायचदा ताको हिंदी वर्जन रे किए लिखिथिले त आंसर हो बसंत कृष्ण वैद्य. The structural part of Indian Constitution is to a large extent derived from the Act of 1909, 1935, 1947, 1919. तो को सोर्स डिराइव करा हेछि तो आंसर है 1935. Which is not a unitary feature of the Constitution of India. Unitary feature कोटा नुह. Integrated judicial system, single citizenship, appointment of the governor by the president, bicameral legislature. कोटा नुह माने बाइकैमरल लेजिस्लेशन माने कोन स्टेट रे दीटा हाउस थिबो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल त हमर टोटल इंडिया रे 6टा स्टेट अछि जहार बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि. Which of the following is not a federal feature of Indian Constitution? कोटा federal feature नोहा हमर Indian Constitution रो dual government, division of powers, all India services, written constitution. तो dual division नोहा कोटा हमर सेटा हमर all India services. Next question will be how many female members were part of the Constituent Assembly that framed the Constitution of India? जो टाइम रे Constitution framing हेतला सेतरे जो Constituent Assembly रो मेंबर माने थिले ता भितर केते जण हमर फीमेल मेंबर थिले तो फीमेल मेंबर हमर टोटल थिले 15 जण. Who was the chairman of the Housing Committee of the Constituent Assembly of India? जो Constituent Assembly रे जो माने मेंबर थिले तांको सब सेपरेट कमिटी रे डिवाइड करा हेतला तो हाउसिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले हमर पट्टाभी सीतारामैया. जीबी मावलंकर was the chairman of the जीबी मावलंकर कहार चेयरमैन थिले advisory committee on functions, order of business committee, ad hoc committee on the national flag. The answer है committee on the functions. The total membership of the Constituent Assembly was 389. तो हमर एतबेले Constituent Assembly formation Constituent Assembly चलथिले तो सेटा में तार total membership थिला 389. से क्वेश्चन करूची which dash were representative princely state ता भितर केते जण हमर princely state को बिलोंग करथिले आंसर है 93. The member of Constituent Assembly signed the Constitution of India on Constituent Assembly रो मेंबर माने Constitution को केबे साइन कले 26 November 1949. In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft a constitution for India? अच्छा को ईयर रे मोतीलाल नेहरू आ तांकर 8 अदर कांग्रेस लीडर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करथिले सेटा हला कतबे केबे हमर 1928 रे. नेक्स्ट which country has the republic feature of Indian Constitution been borrowed from? Republic feature of Indian Constitution को country रो borrow करा हेछि French Constitution, Irish Constitution, British Constitution, Australian Constitution. The Republic, Liberty, Equality, Fraternity, Republic एटा हमर French Constitution रो belong करा हेछि Which of the following constitution inspired the law-making process in India? Law-making process: Irish Constitution, British Constitution, US Constitution, Canadian Constitution. The rule of law, parliamentary government law regarding सब जिन समरे UK government हमने British government रो आसी British parliament रो आसी British Constitution आसी sorry. The concept of independence of judiciary in the Indian Constitution is taken from the Constitution of Dash. Independent of judiciary तो judiciary पर independence माने हमर एटा यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आछि. From which of the following constitution has the Indian Constitution adopted the system of fast past the post? Fast past the post ले हमर British Constitution रो आछि. Judicial review, a salient feature of Indian Constitution, has been borrowed from. Judicial review ले हमर US रो constitution.
The Indian constitution borrowed the concept of concurrent list. Concurrent list কোড আসছে অস্ট্রেলিয়ার constitution আসছে. From which of the following constitutions is the idea of Charter of Fundamental Right? Charter of Fundamental Right କୋଉ sourceରୁ ଆମର ଆସିଛି? Brazilian Constitution, Spanish Constitution, United States of America and French Constitution. ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ୟୁଏସ୍ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ବର ହେଇଛି. ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ. From which country were the ideas of justice of the Indian Constitution borrowed? Justice of Indian Constitution କୋଉଠୁ ବର ହେଇଛି? USSR, UK, US, Japan. ତ ଆନ୍ସର ହେଲା USSR. Emergency provision କୋଉଠୁ ବର ହେଇଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1935ରୁ ବର ହେଇଛି. From which country has the concept of martial law which restrict fundamental rights borrowed? So martial law ଯୋଉଟା fundamental rights କୁ restrict କରେ. ଯେତେବେଳେ countryରେ martial କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା କୋଉ constitutionରୁ? ଆମର UKର constitutionରୁ. India is a parliamentary democracy based on the Westminster model of the USA, South Africa, France, the UK. The answer is the UK. The concept of amendment of the constitution in the Indian constitution was borrowed from the constitution of South Africa, Germany, Canada, Australia. Answer is South Africa. Which of the following provisions of Indian constitution is borrowed from the constitution of Canada? Independence of judiciary, concept of republic, advisory jurisdiction of the Supreme Court, or concept of concurrent list. Answer is advisory jurisdiction of Supreme Court. Then ଆମେ କିଛି articles related questions କରିବା. First ହେଲା which article of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of a state? Article 177, Article 164, Article 167, Article 166. The answer is Article 166. Which article of the Indian Constitution provides that the state must be secure a social order to promote the welfare of people? People ମାନଙ୍କର welfare ଆସିଲା ମାନେ Article 38 DPSP ରୁ ଆସିବ. Article 245 to 255 in Part 11 of the Indian Constitution deals with emergency provisions, financial relations between the center and the states, legislative relations between the center and the states, और हमारा tribunal. Answer होगा legislative relations between the center and the state. Which of the following articles of the Indian Constitution deal with the Parliament and its proceeding? Parliament और तार proceedings ऊपर है को article? Article 51A, Article 36 to 51, Article 79 to 122, Article 12 to 35. The answer of Parliament माने Article 79 to Article 122. Articles 52 to 78 in Part 5 of the Indian Constitution deals with Union Executive. Article 52 to 78 है हमारा Union Executive. Then, which article of the Constitution of India Asanti Sahu. Hi, Hi Asanti. जदि किसी problem होची ताले comment रे कुह. Okay. The next proceed करिवा. Which articles of Indian Constitution lays down that it shall be the duty of the Advocate General to give advice to the government of state upon legal matters. ହେଲା ତ ସେ क्वेश्चन କରୁଛି Constitution Indian Constitution ର କୋଉ article according ଆମର Advocate General କ'ଣ କରିବେ advice ଦେବେ state को upon legal matters. 168, 165, 166, Article 167. The answer ହେଲା Article 165. Next देखिबा हमें which article of Indian Constitution provides for protecting and improving the environment and safeguarding forest and wildlife? The environment और हमारा protection of wildlife ऊपर आसो माने Article 48A. Which of the following articles and parts of Indian Constitution deal with the state legislature? State legislature related article. Article 214 to 231 in Part 6. Article 168 to Article 212 in Part 6. Article 243 to 243O in Part 6. Article 79 to 122 in Part 5. The Part 5
ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 79 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 122 ଆର୍ଟିକଲ୍ 243 ଟୁ 243 ଓ ଇନ୍ ପାର୍ଟ 9 ଏଟା ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରିଲେଟେଡ୍। नेक्स्ट है तो आंसर कौन हम आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल डील करूची स्टेट लेजिस्लेचर पई सेटा हला हमर 168 टू 212 पार्ट 6 पार्ट 5 हला यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 हला हमर स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट okay next hila which article provides that all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. Article 26, Article 24, Article 32 and Article 30. तो हमारा minority रो rights to establish educational institution है Article 30. How many languages are included in the 8th schedule of the Constitution of India as scheduled languages? 22, 24, 23, 21. Answer है हमारा 22. 22 टेस्ट languages हमारा अच्छी 8th schedule रे mention है. Reservation and promotion comes under which article? Reservation and promotion comes under which article of Indian Constitution? Article 19 sub plus 2, Article 14 sub plus 4A, Article 16 4A and Article 15 3B. Answer है reservation and promotion हमारा है Article 16 4A. In which article does the Finance Commission of India find a mention? Finance Commission मैंने Article 3 Article 280. Which of the following articles of Indian Constitution mention that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Council of State? Ex officio chairman of Council of State है Article 89, Article 91, Article 90, Article 92. Ex officio chairman है हमारा Article 89. Which article specify the procedure for amending the Indian Constitution? Constitution रा amendment को article रे mention रहे छे. Article 365, Article 368, Article 366 and Article 367. Answer है Article 368.